are found in India, especially those who are abundant. Abundant minerals too we have almost gone through, but there are secondary minerals that is available or useful in India. Except mica, some are limited in the quantity. So today what we are going to discuss is some metallic minerals also, along with that some non-metallic mineral also we are going to discuss. As we take the minerals, if we say we have more than 100 minerals, so it is not possible to go through all these. So we are taking some of the important mineral resource of India. तो इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांसेस मैक्सिमम है. So other than this, we will go for fuel minerals also on next class. So as we will discuss today, we will discuss the copper, lead and zinc, then mica, limestone, dolomite and gypsum. From this copper, lead and zinc are metal mineral resource hai. Other than that, this mica, limestone, dolomite, gypsum, all these are non-metallic minerals. So let's go for copper first. So when we say copper, lead and zinc, all these are mainly used as alloys, to make alloys. So as we know, copper age before iron age hai. So iska matlab hai we have find out the metal copper before iron. Utna important hai. And for the existence of electronic and electrical industries, the presence of copper is must. For making machineries, electrical machineries, if you take any of like fans, ACs, ये सब लेगा, most of them are using the copper coils used किया होगा उसके अंदर. So copper is using for that purpose, and the wires and cables that carries electricity, that is also mainly comprising with this copper. Other than this, we can use this copper in automobile industries, defense industries, yes, where we need to connect or whether we need to carry electricity, we can use this copper. So there are certain alloys that can be produced by using this copper. First alloy, if it is mixing with iron and nickel, we can make stainless steel. If copper can be alloyed with nickel, we can make moral metal. If we can combine that with aluminum, we can make duralumin. That is, uska quality ko zyada kar sakta hai. Then, if it is mixed with zinc, we can make brass. And if we are alloying with tin, we can make bronze. So, isme se maybe they can ask, if copper is alloyed with zinc, what will be the product? That's why I have given all these alloys. So this is the major purpose of copper. Either it can be used for electrical or electronical industries. Other than this, we can use this mainly for alloy, creating alloys. We can make with iron, nickel, aluminum, zinc. Iske sab ke saath we can make alloys. That is the relevance of copper in India. But comparatively, copper production in India is less. Why it is? Because the average metal content अपना और है, तो अपना और से जो निकालता है कॉपर, वो उसका एवरेज बर्थ कम है. On an average, if you take the average metal extraction, copper extraction from the ore is 2.5%. India is getting less than only 1%. That much of difference we can expect. So what is that? Chalcopyrite is the major for from where we are extracting the copper. And it is found mainly in ancient as well as younger rock formations in India. Just like other
minerals. This is also been mainly found in the Peninsular Platoic region. This copper or chalcopyrite is mainly seen in the veins of disseminated and bedded deposit. So sedimentary rock में भी इसका presence we can expect. International average, as I said, this is only 2.5%, but Indian average is तो इसमें अभी ऐसा है 100 kg chalcopyrite और इसका और लेगा तो उसमें से we can extract only less than 1%. उतना कम extraction ही possible है. Because of the same, क्या होगा? This is the extraction is hectic होगा. This will be costly as well. 1 ton of copper requires almost 1400 kilowatt of energy. उतना सा electricity use करना पड़ेगा 1 ton copper produce करने के लिए. So it is hectic. So what we are mostly depending on import, not export. We can depend on other countries like Chile, US, Peru. They are the most leading producers of copper. Somewhere we can import this copper. So ये produce करने के लिए बहुत problem है. One is it is an hectic task. Otherwise, other than that, this is costly. It requires too much of energy. Electricity is produce इसके तो चाहिए बहुत ज़्यादा. And this will create air pollution. Air pollution भी करेगा. So there are many obstacles for creating or generating this copper. And the leading producers are Chile, US, and Peru. If you look, this is actually the North American and South American countries are producing maximum copper deposit we can get from. Let's see the distribution. So copper deposits are mostly seen in the state of, again usual, झारखंड ओडिशा वो बेल्ट में है ना, तो इसमें ज्यादा हो गया झारखंड में, बट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. झारखंड में गुंझुनू एंड आलवार डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, सॉरी राजस्थान में, एंड इन आंध्र प्रदेश इट इज गुंटूर, एंड इन कर्नाटका चित्रदुर्गा एंड हसन, एंड मध्य प्रदेश बालकट माइंस. इसके अलावा most of the deposits the deposit is very less in India. So what we are importing the copper. And in production, if you take, mostly Madhya Pradesh सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश followed by राजस्थान and झारखंड. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है. तो मैक्सिमम डिपॉजिट है झारखंड राजस्थान, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है मध्य प्रदेश में. As I said, we don't have enough production of copper. We are mostly importing it from North American country and South American country. Other than that, we have Zimbabwe, Japan also. USA, Canada, North America हो गया, मेक्सिको भी हो गया, सेंट्रल अमेरिका में, उसके साथ नीचे अफ्रीका में हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, देन अगेन एशिया में हो गया जापान. सो वी आर importing the copper from these areas. So डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे देखना है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, देन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड इसी एरिया पे है. That's about copper. Now we can go to lead and zinc. This is one of the oldest. Copper बोलने से it has been found in ancient and younger rock formation में we have the presence of copper. But in the case of lead and zinc, it is actually an ancient formation है. इसका deposit ज्यादा देखेगा the rocks which is of ancient formation, especially the pre-Cambrian formation of peninsular shield. It is lesser seen in Himalaya as well. Most of the
minerals is also been seen in Himalayan region में भी है, as it is new for younger one. The quality and quantity is comparatively lesser at Himalaya area. Here lead and zinc, it is from pre-Cambrian period है. So we want to go to peninsular India. The Gondwana land से जो जुड़े हुए हैं, that area we have maximum lead and zinc formation. इसका अपना quality है. This can also be used as alloy. Alloy के तरह यूज कर सकता है. मैक्सिमम इसका यूज उधर ही है. So इसका अपना कैरेक्टर है. It is malleable है, it is stretchable है, it is ductile है, it is soft है. ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक है. Other than this, it is seen in silvery blue और grey color में है, brittle है, breakable है, and relatively low melting point and boiling point इसका है. So this can be used for electrical industry में उतना ज्यादा. Yes, it can be, but उतना ज्यादा जैसे कॉपर जैसा उतना ज्यादा यूज नहीं है. The ores of lead is galena, sericite and anglesite. ये है इसका ores. And of zinc is zinc का नहीं दिया. It is calamine actually. Calamine is the ore of zinc. And it is mainly seen in this zinc and lead usually found together. तो इसका मैक्सिमम इसका डिस्ट्रीब्यूशन है राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड मेघालय में इसका प्रेजेंस है. 85% of the lead is found in Rajasthan. तो राजस्थान में भी होगा lead. अभी if the lead is उधर ज्यादा है तो जिंक भी उसी एरिया पे ज्यादा होगा. लार्जेस्ट सोर्स ऑफ lead and zinc is राजस्थान. तो आज जो पढ़ा है कॉपर के बारे में, it is mainly seen in राजस्थान में है. तो यहाँ भी lead and zinc is also mainly seen in राजस्थान. तो राजस्थान में कहां पर है? रामपुरा, अगुच्चा इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे और राजपुरा, दरीबा एंड सिंधेसर इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट पे. राजसमंद डिस्ट्रिक्ट पे होगा इसका मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट. इट इज आल्सो सीन इन जयपुर, देन अजमेर डिस्ट्रिक्ट एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आई सेट मैक्सिमम लेड इसका तो बहुत एरिया पे है. तो इसमें से ऑलमोस्ट 85% राजस्थान में इसका डिपॉजिट. सो रिमेनिंग ओनली 15%. आउट ऑफ दिस 15%, द नेक्स्ट स्टेट कम्स इज आंध्र प्रदेश विथ 3.31%. तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है. फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, that is almost 2.16, and less than 2% for Bihar and Maharashtra. So maximum, if you see lead and zinc, maximum production is in Rajasthan. But like copper, this is also not sufficient for our domestic use. We want to import lead and zinc. This is the distribution of lead and zinc in India. So if you look at this, you can see maximum concentration at this point, Rajasthan. बाकी पूरा मिला के इधर उधर इसका डिपोजिशन है. So that's about zinc and lead. दोनों में सबसे ज्यादा if you take here, you can see कॉपर भी राजस्थान में ज्यादा है एंड इट इज आल्सो ज्यादा इन जिंक एंड लेड में भी राजस्थान है. सो आफ्टर दिस
zinc and lead. These are actually metal resources, metal mineral resources. So इसके बाद we can go to non-metallic mineral resources. इसमें होगा mainly mica. Why we say mica first? Because like iron and bauxite, iron, manganese, and bauxite, mica is also abundantly seen in India. So we have enough mica production in India. Mica is naturally occurring non-metallic mineral, which has been seen mainly in the veins of metamorphic rocks and also found in igneous rock, and very few is found in sedimentary rock. We can't ignore it, but mostly it is seen in metamorphic rock followed by igneous rock में इसका presence है. So this can also be used in electrical and electronic industry में इसका ज़्यादा use है, just like the copper. So where it is being used, this is a very good insulator. So insulation purpose के लिए, shock से escape होने के लिए, we are using this mica. Why it is being used? It can withstand high voltage and has low power loss factor. So it can withstand high voltage तक इसका तो electric shock नहीं लगेगा. That is the use of this mica. Like copper, mica can be. Mica is a non-metallic mineral, but it is being used in electrical and electronic industry, just like the metallic mineral copper. Again, it can be used for cosmetics बनाने के लिए and also for production of toothpaste. इसमें भी we can put mica. So these are some of the uses of mica, mainly electrical and electronic industry, followed by cosmetic item में भी we can use this mica. So mica का characteristic क्या है? Good insulator है, and it can withstand high voltage. That is why it is being used in electronical and electrical industries. So इसका distribution, let's see. Maximum distribution of resource and not production. Distribution is mainly seen in Andhra Pradesh with 41%. Then we have Rajasthan. So आज जो पढ़ा है इसमें we can see the presence of Rajasthan. Again Maharashtra you can find and Andhra Pradesh you can find. इसमें भी second maximum है Rajasthan में almost 21%, followed by Odisha, then Maharashtra, Bihar. So Jharkhand and Telangana having 1%. इसका distribution ऐसा है, but whatever the data I am giving here, it will vary actually. We can't say so. ऐसा पढ़ के रखना है, इसमें ज़्यादा है. Why I am saying so is because every year it will be 2020, 2021. कुछ लोग तो ऐसे पढ़ेगा, वो लोग पढ़ने से आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, दूसरा लोग पढ़ने से राजस्थान में पढ़ना है. So what we want to concentrate is which are the places, not go for single place, places where we are getting maximum mica distribution. ऐसा पढ़ के रखना है. तो एवरेज अभी आंध्र प्रदेश में 41% है. So always Andhra Pradesh will be the first one. But if I am saying the percentage is 41, again Rajasthan followed by 40, this may vary year to year, person to person. वो जो एजेंसी है वो उसके तरह एक बुक में एक होगा, दूसरे बुक में दूसरा होगा, वो याद रखना है हमेशा. Now the production. इसमें देखो आंध्र प्रदेश था, राजस्थान था, यहाँ भी सेम है. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इज इन आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान.
आंध्र प्रदेश में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट, देन विशाखापट्टनम, वेस्टर्न गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इस इन आंध्र प्रदेश में है, उधर सबसे ज्यादा है नेल्लूर, विशाखापट्टनम, वेस्टर्न गोदावरी एंड कृष्णा रीजन. देन राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इन जयपुर टू भीलवाड़ा बेल्ट है, उधर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जयपुर टू भीलवाड़ा एक बेल्ट है अराउंड उदयपुर, एंड आल्सो इन उदयपुर में भी इसका प्रेजेंस है. तो जयपुर टू भीलवाड़ा एक बेल्ट है इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेनली, एंड उदयपुर में भी इसका प्रेजेंस है, दैट इज इन राजस्थान. देन इन झारखंड इट इज गोधर्मा डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रेजेंस है, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है. देन बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में. Again, we can see mica production in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The southernmost state में भी इसका presence ज्यादा है, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. This is how the mica is being distributed. इधर भी सबसे ज्यादा mica production in आंध्र प्रदेश में है, followed by राजस्थान. Then export of mica. Actually, this is mica. So India is the largest exporter of mica because we have abundant deposit of mica. When we studied in the first unit, generally studied about the minerals of India, we have gone to abundant minerals in India. So उसमें से we have studied iron ore बोला है, मैग्नीज बोला है, फिर we have gone to mica के बारे में we have discussed. So we have enough production of mica. Then this is also इसका और एक प्रॉब्लम है, we have enough use of this mica, we have domestic use also for this mica. यहाँ से maximum production is for world's electrical industry के लिए we are donating it. We are not donating, we are providing it. And it is mainly sent through Kolkata and Visakhapatnam. Why? Because maximum production we said other than Rajasthan we have mainly in Andhra Pradesh में है, फिर झारखंड में है, तो इसी एरिया पे है इसका प्रोडक्शन. सो nearby port is Visakhapatnam and Kolkata hai. Import and imports of Indian mica where fast maximum जा रहा है जापान में, followed by USA and UK. This is actually the trade. That is why we are maintaining good relationship with other countries. यहाँ से trade कर रहे हैं, तो maximum import export कर रहे हैं जापान. 90% यहाँ का Indian mica is moving to Japan, then followed by USA and again to UK. इसका distribution ऐसा है. तो after, so when we say non-metallic mineral, इसमें सबसे important है mica, and the second important one is the limestone. Limestone converting to marble, dolomite इसके सब के अंदर we have the presence of limestone है, limestone का present है. So limestone can be, when it is more metamorphosed, it will be converting to marble भी बनाएगा. So marble have its own uses, limestone has its own uses, ऐसा है. तो limestone में maximum calcium carbonate ज्यादा है. तो calcium carbonate maximum can be used for कुछ केमिकल बनाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, जो फर्टिलाइजर्स बनाता है उसमें, for all these we can use limestone. So it has a great value, economic value है इसमें. So limestone is related with rock made of either of calcium carbonate or with bicarbonate of calcium and magnesium, or the mixture of these two constants. तो magnesium होगा, नहीं तो calcium होगा, इसका carbonate होगा, नहीं तो bicarbonate होगा. That is actually the limestone. Other than mica जो भी हो, other metal minerals हो, limestone is mainly seen in
sedimentary rock, sedimentary origin है, because it is a depositional rock. Deposition के वजह से when it get consolidated, it will become limestone. ये तो ऐसा है, जहां से when there is river और जो agent of gradation है, they will carry carbon either from atmosphere or from the high altitude. They carry the calcium और salt present content है, उसको तो लेके आएगा, कहीं पे डिपॉजिट करेगा, एक के ऊपर दूसरा डिपॉजिट करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा, and it will get consolidated to form this sedimentary rock or the limestone. So this can be used, as I said, for cement industry, iron and steel industry, maybe this can be used. Then chemical industry, then paper, sugar, fertilizers, glass, rubber, and ferromanganese industry में भी इसका uses है. Now we can look the distribution of limestone. तो यहाँ सबसे ज्यादा है distribution of limestone is mainly seen in Karnataka. Almost 28% of the total resources. इसके नीचे है again आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, सब में 11% है. तो 33% हो गया राजस्थान, गुजरात एंड, अभी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान लेने से ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टोटल लाइमस्टोन प्रोडक्शन बोलने से इसी स्टेट पे है. दो हो गया ईस्टर्न साइड में, गुजरात एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हो गया. हमारा ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुला, राजस्थान गुजरात हो गया. नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुला का उसी एरिया पे हो गया. देन सॉरी कर्नाटका, कर्नाटका, गुजरात एंड राजस्थान वेस्टर्न साइड में हो गया. आंध्र प्रदेश हो गया ईस्टर्न साइड. देन तेलंगाना फॉलो 9% है. उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स, एंड रिमेनिंग आल स्टेट्स मिला के हो गया 21%. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है लाइमस्टोन का. सो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. नाउ वी कैन गो फॉर प्रोडक्शन. तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखने से सबसे ज्यादा कर्नाटका में था. राजस्थान is only 11%, but for production, if you look, Karnataka is nowhere. Maximum production is at Rajasthan, 21%. Junchunu, Banswara, Jodhpur, Ajmer, Bikaner, Dungarpur, Kota, Tom, Alwar, Savai माधोपुर एंड नागौर, इसी एरिया पे सबसे ज्यादा लाइमस्टोन प्रोडक्शन है. द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इज द मध्य प्रदेश, 13% है. यहाँ जबलपुर, सतना, बेतुल, सागर, दामोह एंड रेवा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. Third one is Andhra Pradesh, that is almost 12% at Kodappa, Kumul, Guntur and Krishna area. Then we have Gujarat, 9%, Amreli, Kachh, Surat, Junagadh, Kheda and Panchamahal, इसी एरिया पे है limestone. Other than this, we have production in Chandigarh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Karnataka and Telangana. यहाँ कर्नाटका आएगा, आता है. इसका प्रोडक्शन है only 8% state. So this is the production of limestone. So after limestone, we can move to dolomite. Dolomite में ही ऐसा है, इसमें भी we have presence of limestone.
लाइमस्टोन विथ मोर देन 10% ऑफ मैग, इसमें भी लाइमस्टोन है, इसमें क्या हो गया, लाइमस्टोन विथ मोर देन 10% ऑफ मैग्नीशियम होने से वी विल से इट एज डोलोमाइट. If the magnesium production magnesium content is more than 45, it is known as true or pure dolomite polymer. This can be used for blast furnace flux as a source of magnesium salt, and in fertilizer and glass industry में इसका maximum use है. Mainly seen in Odisha, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान and कर्नाटका. So इसका काउंटर ये सब मिला के almost 90% of the total production है. But when we go for the distribution, we have distribution in छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, झारखंड में है and राजस्थान में है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ज्यादा मिनरल इसका तो और नहीं, इसका तो परसेंट ज्यादा, डिपोजिशन ज्यादा होगा छत्तीसगढ़ ओडिशा, लेकिन उसका प्रोडक्शन दैट कैन बी कन्वर्टेड फॉर यूजेबल फॉर्मेट में मैक्सिमम होगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड कर्नाटका ये एरिया पे. देन वी हैव जिप्सम. डोलोमाइट ये सब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अभी ऐसा पूछ सकता है कि राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया. तो ऐसे बोलने से मैक्सिमम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. डोंट गो फॉर एक्जैक्टली फॉर डोलोमाइट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब नहीं पूछेगा क्योंकि दैट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कंपैरेटिवली लेसर. तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आयरन, इसमें से कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है. देन बॉक्साइट पूछ सकता है, देन मैंगनीज पूछ सकता है, देन मोस्टली दे विल आस्क फॉर ये पावर रिसोर्स के साथ बारे में लोग पूछेगा. आफ्टर दिस वी हैव जिप्सम. तो इसमें भी जस्ट लाइक लाइमस्टोन, इसमें भी मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है, सल्फेट्स ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम है, दैट इज जिप्सम. तो जिप्सम वी नो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब बनाने समय वी विल यूज जिप्सम एक्चुअली फॉर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, कुछ केमिकल्स बनाने के लिए वी कैन यूज दिस जिप्सम. यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया सल्फेट फर्टिलाइजर एंड इन सीमेंट इंडस्ट्री, सो केमिकल. तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी दिस कैन बी यूज्ड, दिस जिप्सम. एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राजस्थान for gypsum का. So all this today whatever we have discussed, you can see the presence of Rajasthan. Other than this we have Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Gujarat and UP, Uttar Pradesh. इसका उसी है. If you look at the percentage, almost 81% of the resource you can see in राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देख पाएगा. फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर ऑलमोस्ट 14% ऑलमोस्ट है. देन तमिलनाडु 2% है. तो 60% ये हो गया, 81% ये हो गया, टोटल 97% ऑलमोस्ट कंप्राइज बाय राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु में हो गया जिप्सम का प्रोडक्शन. So these are the important non-metals in India: mica, limestone, dolomite, gypsum. ये है. इसके साथ आस्बेस्टोस होगा, आई सब फिर कोल ये सब होगा, इसके साथ अलग होगा. But mainly these are the ones. If you look at the distribution pattern, यहाँ you can see maximum distribution is in at this point. राजस्थान में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है. Then again if you look, you can see maximum production at these areas.
इसी एरिया पे you can see the distribution. So there is two kind of distribution. सबसे ज्यादा distribution you can see in Rajasthan region, some in Gujarat. Then if you look Andhra Pradesh, sorry, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana, then Karnataka and Tamil Nadu. इसी एरिया पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है दिस नॉन मेटालिक मिनरल्स का. सो दैट्स इट. इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरी नहीं है, बट द मेन थिंग इज दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ये नाम है, नाम याद रखना है कौन सी स्टेट में. ऐसा करना है कुछ तो शॉर्टकट बना के रखना है. अभी माइका यम, तो यम से माइका बोलने से ये जो जगह पे जाता है ना, तो उसका ए आर ओ एम, इससे अपना अपना याद रखने के लिए एक नाम ऐसा सोच के रखना है. तो इजली यू कैन एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ये हम बोलने से नहीं होगा क्योंकि फिर भी वो नाम कंफ्यूज होगा. सो खुद से लिख के जो आपको कन्विंसिंग है वो ऐसे याद रखने से यू कैन यूज दिस. ऐसा है बोल के. सो इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट यू वांट टू गिव, इवन दो आई हैव taught you all this, we have discussed all this, you want to mainly concentrate on iron. Mostly you can expect question from iron and iron industry, iron or case you can expect questions. Then coal, petroleum products से भी you can expect maximum questions. इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर एंड माइका. जो हम आज पढ़ा है ना, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर एंड माइका से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है. ओके, इसी एरिया पे कुछ डाउट है सर? हाँ, ये स्टेट का साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट के साथ में ना स्टेट भी याद करना पड़ेगा क्या? डिस्ट्रिक्ट भी याद करना पड़ेगा क्या स्टेट? डिस्ट्रिक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट आप ऐसा करना है पूरा आपको तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा. आप तो देखना है अभी आंध्र प्रदेश लिया, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यूसली आ रहा है. ओडिशा में कौन सी, अभी सिंघम बोलने से वो तो कंटिन्यूसली आएगा ना. तो ऐसा 3-4 पढ़ के देखना है. दैट विल कम ऑन मैक्सिमम मिनरल्स में. वो तो सेम ही आएगा, एक ही जगह से सब एक ही जगह से एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वो याद रख के देखना है और कुछ नहीं. मेनली यू वांट टू गो थ्रू एरियाज, कौन सी एरिया पे ज्यादा है. मेनली होगा ओडिशा होगा, झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा. देन इन वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हो गया. कौन सी है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड. ऑन द वेस्टर्न साइड मैक्सिमम आएगा राजस्थान, गुजरात. देन इन द सदर्न साइड नीचे आएगा कर्नाटका. देन सेकेंडरी स्टेट्स बोलने से अगेन वी विल हैव आंध्र प्रदेश, देन वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव मध्य प्रदेश. ये सब सेकेंडरी स्टेट्स है. मेन स्टेट जो हम अभी बोला है ना, वो स्टेट ही मेनली आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में. तो इस स्टेट से जो मेन स्टेट हम बोला ना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तो इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, क्योंकि व्हाट एवर द नेम यू आर डिपिक्टिंग, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स यू कैन फाइंड देयर. सो किसी को ऐसा नहीं बोल पाएगा कि इट इज नॉट प्रेजेंट देयर ना, ऐसा नहीं बोल पाएगा. ओके, सो ऐसे एक टेक्निक लगा के पढ़ना है. क्लियर? जी सर, थैंक यू सर. सर हाँ, जैसे आप माइका में जो इमेज डाला है ना, उसी तरह जो कॉपर जिसने सब में भी एक एक इमेज डालने सीखा. ये लास्ट में आया है ना, वो सब है, आप देखने से आपको समझ में आएगा. नहीं, उसका इमेज जो जैसे माइका में जो अलग से एक इमेज है ना. नहीं, ये है ना, अभी ये सिंबल देखो, सिंबल में आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर है ना. वो नाम चाहिए आपको. ओके ओके ओके, दैट आई विल कलेक्ट एंड पुट इट. ओके, आप माइका में एक तो प्रॉपर इमेज दिया ना, उसी तरह जिसमें कॉपर. ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर. थैंक यू सर. ओके.
Okay then.